Gunwan, possible for you to start video? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, we can start with a little bit of introduction, brief introduction, maybe your name, where you're from, what you do, and what attracted you to this session, what brings you here. Who wants to start? Raj, maybe you can start. Okay, I'm Raj. I'm based in Dallas, Texas. I've been attending this particular set of sessions with Yogesh. I know Yogesh for the last 4 or 5 years now. We are fellows and counselors. Yeah, so and these particular sessions are very insightful. They get a lot of good nuggets coming out of those. So yeah, I look forward for one more fulfilling session. Thank you. And what do you do? I currently I'm exploring. I'm looking for opportunities Yeah, but in the you're in next the IT field. direction. Sorry. You're in the technology, IT, information Yeah, technology. yeah. I basically am technology leader in the IT. Yeah, Sanchita. Yeah, so I've been following Zen counseling for 2 years, but somehow I have not been able to attend the course. And I'm a professor at COEP. That is a College of Engineering, Pune, Department of Management I'm at. And I thought let me start with uh, getting to know these techniques before the course itself. So that is the purpose with which I have come. Oh, Yeah. good, good. Anyway, so this is not going to be a Zen counseling session per se. That's a separate thing, but we will get to know what happens. Okay. Hi, Anil. Yeah. Yes, sir. I'm Anil. Actually, I'm running a business for content and marketing. I have a small team of 6 people under me. I have attended this session particularly because I saw your presence over there. So thought it would be something creative, so I joined. Good. Anil and I worked together in the same company for some time. Yes, Gunwan. हेलो सर, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं जैन के बारे में थोड़ा पुरुषों से सुना था और कहने को मैं रौनक के स्टूडियो में मिला था और अच्छा 2 बार अच्छा मैं जैन काउंसिलिंग के लिए ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया इसी वजह से। अच्छा 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 अच्छा। आप रौनक वाज रौनक मेरा बेस्ट फ्रेंड। रौनक को हाँ जानते थे? हाँ सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वहाँ पर मैं डायनेमिक करता था रेगुलर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लविंग फाउंडेशन में भी जाते थे? हाँ हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आप केनिची से भी मिले हो? हाँ जी, वो फर्स्ट टाइम आए थे वहाँ, हाँ तभी मैं हाँ। मिला था रिश्मा और उन्होंने जो कोर्स किया था वहाँ कोर्स अच्छा, पुणे में से। ओशो पुणे में किया है। ओके ओके, गॉट इट। वो मैंने तो नहीं किया काफी था साल हो गए। हाँ रिश्मा ने वहाँ किया था तो फिर उसने वहाँ बुलाया था, मैं हम्म। मिला था। बढ़िया बढ़िया। आपको हिंदी कंफर्टेबल है कि इंग्लिश? मेरे को इंग्लिश समझ में तो आती है, बोलने में थोड़ा दिक्कत रहता है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक हमें सब हिंदी इंग्लिश आती है, तो नो हाँ, वरीज। मेरे इंग्लिश में समझ तो बस पड़ जाती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं अभी? सर अहमदाबाद में एएमसी में हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये अपने अनिल जी भी अहमदाबाद के ही है। और गुड। तो अभी तो 2 स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। जेन काउंसलिंग के लिए एटलीस्ट 8 या 9 लोग चाहिए, तो फिर अच्छा होगा। तो वंस आई गेट 2 स्टूडेंट्स आई विल अनाउंस। गुड। सो आज का जो टॉपिक है, डिस्कवरिंग इनर स्टिलनेस। तो बिफोर दैट मे बी मेरा भी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम योगेश लोखंडे है और मैं अभी ये जो जेन सेशंस है ये कंडक्ट करता हूँ। लास्ट ईयर तक मैं एक फुल टाइम जॉब में था, सिग्नेट नाम की कंपनी में। और मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब इंडस्ट्री में।
उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने जॉब छोड़ के अभी आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू which is close to my heart, what I like to do. But it's not just because what I like to do. That is not the key thing. Key point ये है कि there is something very specific that I really want to talk about, which is the possibility of human beings directly seeing reality. ओके हम लोग लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन कैसा है, वो एक ऑटोमेटिक फंक्शन हो गया है अभी। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। वो एक हम स्टोरी में उलझ गए हैं। हमें ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं है, nobody has taught us what life is all about। तो मेरे साथ ये काफी साल पहले ही ये इंक्वायरी चालू हुई है, इनर इंक्वायरी। एंड आई यूज टू वंडर कि why people cannot understand each other since childhood or since my school days, college days। I used to really observe and wonder कि लोग एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते, क्यों इतना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और why they are not able to get along, why they are destroying the world, why they are getting into wars, and ये सारे क्वेश्चंस थे। और ग्रेजुअली फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अप। I got interested in spirituality and studied Zen and Buddhism and all different kinds of spiritual literature. I also practiced meditation and some other techniques just to try to find out, because बाहर से तो नहीं समझता और बुक पढ़ के भी नहीं समझता है, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही ढूंढना पड़ेगा अपना आंसर। वी हैव टू मेडिटेट एंड बी साइलेंट एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग, क्योंकि बाकी लोगों ने भी वही किया है। दे ऑल डिड मेडिटेशन एंड फाउंड समथिंग। तो वो क्या चीज है जो उन्होंने डिस्कवर की, व्हाट इज इट दे फाउंड। तो दिस वाज माय आल्सो सर्च। सो आई बिलीव दैट आई हिट अपॉन समथिंग विच इज जेन्युइन, लेकिन उसको कन्वे करना भी उतना इजी नहीं है। इट्स नॉट सो इजी टू जस्ट शेयर इट। आई ट्राई इट बट it's not so easy because it requires the other person also to be ready, the other person also to be equally interested, the other person also to be so serious and curious to know. So a lot of factors are required. So my purpose of starting this session, Zen dialogue sessions, is to just create a space, some environment where maybe we can discuss some topics and try to go deeper into it. And in that exploration, maybe it is possible for some of you to gain some new insights, some new view into life and reality, which may bring some changes into what you are doing, how you see and do things. Okay, so that was the background context. And every week I come up with some new topics, but then the whole idea, it all depends how the participants interact and to what level you want to go deep, we can go deep. Okay. So what we can do is today, maybe we can start because we have some new individuals. We can start with asking, what is your experience in this field? Have you meditated? Have you explored? Have you read some books? Are you searching for something? आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? What are you struggling with? Whatever you wish to share, you can bring it on the table so we can see what is there. Anyone can start. Feel free to reflect and share.
Anything, Raj? Yeah, I think this is a question very close to understand the reality, right? The reality which is inside me, the reality which is outside me, right? And there is certainly a dissonance in that case. So I've pondered a lot around that. I do meditation. Uh, yeah, but it's still at the state where to explore. The more you explore, the more you find, uh, the more shadows vanish. I think most of those are shadows, I believe. So yeah, it's in process. Yeah. Any particular thing that really troubles you, or some question that you haven't found the answer to? No, I mean, in spite of knowing, okay, getting caught, right? So, uh, so we know the factor of reality, right? But then, in spite of knowing till the point, I mean, there are times where you basically get caught in the world, right? So you act based on that. So you basically feel bad, feel sad, feel good, feel bad, right? Either way, I mean, it's both the side of the emotions. And then later on reflecting, ये stupidity था वो, right? तो वो क्या कर रहे थे वो? But that happens later because that's a separate world altogether, right? So you basically switch between the worlds and then you act in a particular way in each of that particular set. So उस particular period के अंदर, right? You act out whatever is your reality. Okay. So that is one thing where, I mean, somewhere there's an expectation, which is maybe a wrong expectation कि was you should in that particular world, right, not get impacted. जैसे मतलब आप समुंदर में हो और there is a storm going on, right, and you expecting अरे वो storm तो चले पर मैं ठीक रहूँ उसके अंदर, right. You have to go through it, but then the resistance which basically comes कि भाई you know all the storm and everything, right, but then acting in that particular storm, right, you go through it, uh, and being okay with that, right. वो एक expectation है, अब reality है कि नहीं बात अलग है. But that is one part where I seem to struggle. Uh, but they also I'm able to step back also. मतलब ऐसे तभी करते the moment तुमको मालूम पड़ता है कि ये तो ऐसा है, right? You step back and then see it clearly, seeing that it's okay. So वही है, मतलब जो पीरियड अंदर का है वो कम होके बाहर की पीरियड में ज्यादा रहे तो अच्छा है. That's what I am looking forward to. Maybe an expectation, right, wrong, I don't know, but yeah. ओके. गुणवंत जी, कुछ कहना है? आप तो ओशो डायनेमिक मेडिटेशन भी करते हैं, राइट? हाँ, करते थे। अभी प्रैक्टिस करता है? अभी नहीं करते। अच्छा अच्छा. अभी थोड़ा मेरा मदर का थोड़ा प्रॉब्लम था, हेल्थ प्रॉब्लम, इसकी वजह से टाइम नहीं दे पा. ठीक. ओके ओके. आपके कुछ प्रश्न हैं? कुछ व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? जैन के अंदर थोड़ा समझना है आप डिटेल में. अच्छा. You just want to understand, you want to learn. Okay. Anil? Yes, sir. Sir, so एक साइकिल चल रही है लाइफ की पूरी, तो वो साइकिल से कैसे बाहर आना है वो सीखना है. मतलब कॉम्प्लेक्स साइकिल जो है, कि मतलब
कोई भी कुछ बोले और उसका खराब लग जाए आपको, तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस बनाना चाहता हूँ, पेशेंट बनाना चाहता हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। डिसीजन मेकिंग है जो उसमें इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो कब मैं थोड़ा शाय हूँ, तो कभी कभी सामने वाला मेरे को समझता है कि ये इतना स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो सब एंजाइटी रहती है दिमाग में, तो कई बार फोकस नहीं कर पाते चीजों में, उसमें से बाहर आना। बाहर आके क्या करोगे? बाहर आना है या उस साइकिल को चलाना है अच्छे से? ये हाँ, मतलब साइकिल चलाना बैलेंस, ही छोड़ना है? नहीं बैलेंस लाइफ जीना। बैलेंस करना है। ओके। And Sanchita, anything? Yeah, overthinking. Overthinking is the pattern that I have been observing for my own thoughts, and it gets repeated. After which, I try to balance myself, and then again it gets repeated. So it is a pattern. Yeah, it's a pattern. We all are patterns. As human beings, we are a pattern in a way. एक पैटर्न फॉलो करते हैं और वो पैटर्न में हमें थोड़ा कंफर्ट मिलता है, इसलिए हम वो करते हैं। वी आर कंफर्टेबल इन दैट पैटर्न क्योंकि हम फेमिलियर है। आई नो व्हाट इज ओवर थिंकिंग। आई नो कितना करना है, कितना नहीं करना है। सो इट्स ओके। व्हाट एल्स टू डू? Want to stop overthinking? Do quick decision making? No, that I do already, but overthinking is something that kills the productivity. And then I'm not able to concentrate on what I'm doing. So I want to concentrate on what task I am doing right now, and don't not think about the future, then what will happen, whatever the pattern of overthinking is. Yeah, it is very natural because we want to focus on one thing, but something else comes in. अरे वो भी तो है करने का। Hmm. अरे अभी 4 बज गए, अभी मुझे उधर भी तो जाना है। तो ये काम पे तो फोकस होता नहीं है। और मैंने सोच के चालू भी किया कि ये 1 घंटा मैं इस पे फोकस करूंगा, फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। वो कुछ सोचना तो रह नहीं गया। डिड आई फॉरगेट अबाउट समथिंग? राइट। सो देन वी So कांट फोकस। yeah, so to tell you in brief that I'm now pursuing my PhD, and it's a very long journey. So now I have to do my literature review. I'm at that stage. So to do that, I need to focus on that, but I don't know yet how to do it. So then I'm just discovering and, just exploring how to go about it, and how to use these AI tools for uh, this literature review and other things that might be very helpful. So that is the exploration stage that I am at. Okay. And you also meditate? I try to. I have this neuro-linguistic programming that I had done, NLP,
quite long before. So they have some exercises like kavach, smile, and appreciate. Then they have few exercises. So I've been practicing that on and off, but yes, on and off, not very regular or consistently. So overthinking is quite common. In fact, last week, our session was focused only on overthinking. Oh, But you know what? Today's topic is discovering inner stillness. But let's also look at outer world, what is happening. Today, if you start the TV, put it on, the kind of news that you get is all about trying to create some fear, some scarcity, petrol prices going up, and some possibility of lockdown. People are thinking about it. And in Pune, there is curfew for 14 days for no reason. no. You haven't heard? There is curfew in Pune till 8th of June. Oh, is it? See, people are not even aware. There is news. I was reading it and it's on the TV also. Oh, So many things don't make sense. And then there is a war going on in Middle East. Russia and Ukraine has been going on for 4 or 5 years now. So, in management terms, there is if you go to any management uh, event, all the speakers they talk about VUCA. You might have heard of VUCA, VUCA. Volatility, V for volatility, U for uh, quiz you, Uncertainty. uncertainty. uncertainty, C for VUCA is Complex. complex, Complexity. complexity, Yeah. Vulnerability, complex, adaptability, uncertainty. and VUCA, ambiguity. ambiguity. Sorry. Ambiguity. Yeah. Okay. So volatility means things are changing too much, like stock market एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है, पेट्रोल प्राइस एक दिन ऊपर है नीचे है, एलपीजी आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, आज लाइन है कल लाइन नहीं, सो इट्स ऑल चेंजिंग, वोलेटाइल, करेक्ट. अनसर्टेनिटी, क्या होगा पता नहीं, लॉकडाउन होने वाला है नहीं होने वाला है. कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, यूएस ईरान को सपोर्ट कर रहा है कि उसके साथ वॉर कर रहा है, कभी बोल रहा है आप रशिया का ऑयल ले लो, कभी बोल रहा है ईरान का ऑयल ले लो, कभी बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कभी बोल रहा है. इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज आर नॉट सो इजी टू understand, and what goes on in our life also is not so easy to understand. So complexity is there, it's not easy to make a decision. And ambiguity means क्या न्यूज सही है और कौन सी न्यूज एआई जनरेटेड है, वो समझ में नहीं आता है. एआई वाली न्यूज भी आजकल बहुत आ रही है और वो भी असली लगती है. एम्बिग्यूअस है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इट इज नॉट सो इजी टू डिटरमाइन. So when we are living in a VUCA world, and I think the world has always been VUCA. It is not a recent phenomenon. Since ancient times, the world has always been in VUCA. I don't think there is any change. Do you agree with me, or you think earlier days were better? Was there a Yeah. peaceful time sometime in the past, and now we are somehow reached a VUCA stage?
They might have VUCA in comparison with those times than Yeah. what we see. Now we see VUCA because more often than what it was, because we are living in that kind of world. That's what I feel. Yeah, but relatively, some people did some analysis and they say we are living in the most peaceful time these days in terms of the global wars. Because in ancient times, war was more reality. Everyone was fighting with somebody else, with their neighboring kingdom, trying to annex, trying to take over, whatever. So there were actually more fights, and people were on their own mostly. They had to learn how to defend their own house, own village, own country. Everybody had to be ready to do that. Today we are, depending on our army and armed forces, today we are living much more peacefully in our cities. फिर भी हमें टेंशन है. So VUCA is a state of mind in a way, right? So we always feel uncertain by looking outside. Whatever is the state, it is always some uncertainty is going to be there. तो जब बाहर ये सब चल रहा है तो to how to be, uh, how to be calm and how to be balanced and uh, how to live. In fact, that is the big question. So what is our response? Our normal response is that we try to isolate ourselves. हम अपने कॉर्नर में चले जाते हैं. हम अपने एक सेफ सेफ जगह पे चले जाते हैं. अगर बाहर बहुत गर्मी और बारिश है तो हम घर के अंदर आ जाते हैं. अगर किसी से मेरे वाइफ से अगर मेरा झगड़ा हो गया तो मैं अपने रूम में चला जाता हूँ. ठीक है, तो मैं तो आइसोलेट हो जाता हूँ. तो वी ट्राई टू सेफगार्ड अवर सेल्व्स फ्रॉम the outside influence by protecting ourselves, by creating some boundary. And in that boundary, we try to find some peace. करेक्ट, ऐसे ही करते हैं कि हम कि कुछ और करते हैं. Are you following? Does it make sense? कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. तो जितना कंफर्टेबल है उतना ही करेंगे, उससे बाहर नहीं करेंगे कुछ और, क्योंकि उतना ही आता है मुझे. तो हमें लगता है कि इन दैट कंफर्टेबल जोन वी आर सेफ. वो वो एग्जाम्पल भी बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रिच का एग्जाम्पल है ना कि ऑस्ट्रिच सीज अ डेंजर, इट जस्ट पुट्स its head in the sand, and by thinking that because it cannot see the danger also cannot see it, तो वो छुप जाता है थिंकिंग कि नाउ इट इज सेफ. बट फिर वो दैट इज यूर फूलिंग योर सेल्फ. बेसिकली वी आर ऑल फूलिंग आवर सेल्फ बाय डूइंग दैट. इट डजंट वर्क. कहीं ना कहीं तो we have to face. So if Sanchita wants to concentrate and focus, it is not possible because all these thoughts keep coming कि मेरे तो और 10 काम है वो भी करने हैं. एक ही पे मैं फोकस करूंगी तो बाकी के 9 काम कब होंगे, है ना. तो the mind says you must do everything, and to
to get any one thing done, you have to concentrate. So there is always a pull कि ये करूं, एक पे फोकस करूं कि 10 पे थोड़ा थोड़ा फोकस करूं. So what do you end up doing? Sanchita, how do you manage then in such situation? Need to focus on what you are doing at the moment and not think about the other tasks. Yeah, but that's easily said and then done. Yeah. That you already know that this is what you need to do. It doesn't happen. Hmm. Anil tries to balance, but he tries to make an effort to become more extrovert in front of the clients. But then he has a thought that, oh, I am not so good enough, so clients may take advantage of me. Something like that. What goes on, Anil? विशियस साइकिल चलती है रहती है. Vicious cycle मतलब एक कंडीशन में दूसरे, एक सिनेरियो में से दूसरे सिनेरियो में, फिर वापस दूसरे सिनेरियो में आ जाते. एक बार सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. हम्म. गुणवंत जी कुछ कमेंट्स हैं आपके, कुछ थॉट्स आ रहे हैं? नहीं सर, अभी नहीं. तक तो नहीं है. अच्छा, आप फॉलो कर रहे हैं क्या? हाँ जी, डिस्कशन हो रहा है? हाँ जी. अच्छा, ओके. आपका क्या जॉब है एएमसी में? क्या जॉब है आपका? क्लेरिकल है. क्लरिकल जॉब है, ओके. कितने साल से हैं अभी उधर? अभी तो रिटायर होने वाले हूँ सर. आई एम रनिंग अच्छा. 57. हम्म. रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है? वही तो सोच रहे हैं, सही शायद यही सोच रहे हैं, कुछ हम्म. ऐसा करे जो अपने को अच्छा लगता है. बराबर. आई नो, ये रिटायरमेंट मतलब वो तो एक सोसाइटल. हाँ वो तो ठीक है, हम्म. लेकिन मेरा भी एक अभी जो आपने बोला ना, मेरा भी यही शौक है कि मेडिटेशन करे और अपने को थोड़ा डीप में जाए. हम्म. और मैं वहाँ कराता था भी सुबह में, अभी थोड़ा टाइम से बंद हो गया है. और रौनक के जाने के बाद फिर मैं वहाँ कम जाता हूँ अभी. हम्म. अभी यही सोच है कि जैन काउंसलिंग के बारे में मैंने 2 बार पैसे भी भरे थे, 2 बार टाइम भी लिया था. लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे चाचा का लड़का एक्सपायर हो गया उसी टाइम, जब करना था, कोरोना था उस टाइम. तो केनेची लेने वाले थे तो नहीं कर पाया. दोबारा भी रौनक ने करवाना का था, तो लेकिन उस टाइम भी कुछ ऐसा कोई हो गया इश्यू के नहीं पा रहे हैं. और अभी भी आपसे शायद वो केनेची से बाद में मुलाकात हो रही है अभी. वो उसका मैं फेसबुक में पढ़ता रहता हूँ. तो जो जैन मतलब सिंपल हम्म. और प्रेजेंट, उस हिसाब से समझने के, तो आपसे थोड़ा मुलाकात मतलब करें कि आप डिटेल में समझाएं थोड़ा. ये अच्छी बात बोली आपने. zen इज सिंपल. तो अगर आपको zen सीखना है तो zen इज वेरी सिंपल. एनीथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड इज नॉट zen. दैट इज व्हाट केनिची सेज. बट लेट्स वी आर टॉकिंग, अभी हम हाउ टू बात बी कर रहे सिंपल, हैं. इट इज नॉट सिंपल. तो सिंपल होना अच्छा हो नहीं पा रहे हैं. इट इज एक्चुअली सिंपल. आई विल शो यू. अभी अभी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं मैं. It's actually very simple. Let us try.
let us experiment. Because without experiment, we cannot learn. Science is all about experiment. And Zen is a science of the mind. So we must experiment. And to experiment, we need to set up, no? We should have some beakers and liquids and mix and see what happens. Experiment is all about setting the situation and making an observation. If you remember what you did in 11th, 12th, right? And recording those observations, showing it to the instructor, and then he used to give you some marks. Anyway, so today we will observe. So what to observe? Observation is very simple. We need to observe what is all around us and what is all inside us. What is outside, what is inside, we need to observe. So for the next 2 minutes, we will just pay attention to whatever is happening and then come back. Okay, I will start the timer. I'm not giving any more instructions. Just pay attention to whatever is happening for 2 minutes. I will start the time. Okay, time is started. Okay, 2 minutes are over. Now for the next 2 minutes, there is a new exercise. Another exercise now for the next 2 minutes is just take the back of your palm and just observe the back of your palm for 2 minutes. Maybe you can focus on one point. हाँ समझ गया ना? Just take your hand and the back of your palm. Just observe any one point for 2 minutes. I'm starting the clock now.
Okay. So 2 minutes are over. Now I will give one more shorter exercise. Maybe for the next 1 minute, just observe, close your eyes and observe your breathing in and out. That's all. 1 minute. Okay. It's 1 minute passed very fast. It was almost 2 minutes. Okay, how do you feel? What are your observations? क्या नोटिस किया है? गुणवंत जी आपसे चालू करते सर पहले तो जो 2 मिनट में कराया तभी तो मेरे को बहुत सी आवाजें सुनाई दी। कहीं दूर रेडियो बजता है, कहीं बाजू में डगिंग हो रहा है, कोई बच्चा सुन, वो अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी आवाजें मेरे को सुनाई दे रही। और जब वो आपने हाथ में बताया तो हाथ में से मेरे को सेंसेशन होता मालूम पड़ा। हाथ में जो फीलिंग होता है, थोड़ा एनर्जी का और वाइब्रेशन और पसीना का थोड़ा महसूस होता है, फीलिंग होगा। और जब एकदम ब्रीदिंग पे गए तो जो मैं मेडिटेशन में जाता हूँ लास्ट स्टेज में, जो 10-15 मिनट में लिए साइलेंस हो जाता है, सब फीलिंग होगा। और एक साइलेंस सी आवाज भी सुनाई दे रही है, देखिए कभी। हैं। अनिल, सर पहले मतलब आजू बाजू ध्यान जा रहा था, मेडिट मतलब आइज को बंद करके किया तो थोड़ा रिलैक्सेशन लगी। are you feeling relaxed? यस सर। Okay. Sanchita? It was relaxing. And I have almost slept after 2 minutes, I think. Oh, in 2 minutes you fell asleep.
Okay. It was actually 5 minutes. 2 + 2 + 1. हाँ. So after which 2 minutes? Last one with closed eyes, no? Last. Last Okay. 1 minute, I think I was fast asleep only. बिकॉज बॉडी रिलैक्स्ड एक्चुअली. Yeah. फर्स्ट 1 मिनट में क्या हुआ, बहुत रिलैक्सेशन आ गया, उसकी वजह से नींद लग गई. So which means throughout the day you were tired. Otherwise या तो नहीं होना चाहिए, but I think you were tired. या तो आज घर पे थी ना, तो आज बहुत घर का ही क्लीनिंग करने में लगी थी ना, तो आज दैट वे आई वाज टायर्ड. Yeah. अदरवाइज ऑफिस से आने के बाद वो ऑफिस का स्ट्रेस रहता है, बट आज घर पे होने की वजह से मेंटली रिलैक्सेशन था, फिजिकली टायरिंग था. Raj, Things slow down quite considerably. सब चीजें आराम से स्लो मोशन में हो रही है, मतलब सांस भी आराम से चल रही है, बॉडी भी रिलैक्स्ड है, क्या थॉट आ रहे हैं वो भी इजीली दिख पा रहे हैं. आई थिंग्स हैव कंसिडरेबली स्लोड डाउन. so आइडिया ये था कि पहले 2 मिनट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, है ना? मैंने तो बोला सिर्फ पे अटेंशन टू वॉट एवर इज हैपनिंग. तो आवाज भी सुनाई दे रही है, सेंसेशंस भी हो रहे हैं, और इधर उधर अटेंशन सब जगह जा रहे हैं. फिर दूसरे 2 मिनट में यू हैड टू फोकस ऑन वन प्लेस. चलो, ये तो हाथ लिया, कुछ कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, कैन बी एनीथिंग. तो पूरा अटेंशन एक धीरे से फोकस में आ, राइट. लेकिन आंखें खुली है क्योंकि हम देख रहे हैं, सेंसेशंस भी फील हो रही हैं. और लास्ट में आंखें भी बंद कर दी और फोकस ओनली ऑन ब्रीदिंग. बाकी जगह से अपना फोकस भी हट गया. सुनना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोकस ऑन द ब्रीदिंग. तो हमने धीरे 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 अटेंशन को नैरो किया. बराबर है. इसीलिए ये विद इन 5 मिनट्स यू फील रिलैक्स्ड. वी पर्पस ऑफ गिविंग दिस एक्सरसाइज टू शो कि हमारा जो अटेंशन का रेंज है, नॉर्मल अवेयरनेस में हमारा अटेंशन हर जगह है, सब जगह घूमते रहता है. क्योंकि यू रिमेम्बर वुका वर्ल्ड, क्योंकि हमें देखना है कहीं से कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं आ रही है, कहीं से अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कहाँ पे डेंजर है, तो कहाँ से मुझे बच के मुझे सेफगार्ड करना है. सो पर्पस ऑफ आवर अटेंशन इज ऑलवेज टू सेफगार्ड अस. सो वी आर मोर अवेयर. बट अगर किसी ने टास्क दे ही दिया है कि चलो इधर ही फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ, तो हम भूल भी जाते हैं बाकी सब, और वी आर ओनली फोकसिंग ऑन वन प्लेस. तब हमें वो अनसर्टेनिटी और वो सब पे उतना अटेंशन नहीं जाता है. और जब आंखें बंद करके हम व्हेन वी गो डीप इनसाइड, देन वी आर इवन मोर रिलैक्स्ड. Maybe we have learned that now there is nothing to worry about, so now we can peacefully relax. So the key point here is where is our attention? Attention is our main uh, function, if I can say that. Normally, attention is going from one place to another. It is just jumping from one place to another. That is why they call the mind the monkey mind, right? And that's because the attention is jumping from one thing to the next, to the next, to the next. But it is possible to control that attention. In fact, that is the only thing we can control. I don't think we can control anything else. We cannot control our heartbeats. We cannot control our circulation, blood circulation. We cannot control our digestion.
We cannot control when we get up, when we sleep, but the only thing maybe we can control is our attention. So, so from time to time, just notice where your attention is. If you can do that, then gradually over a period of time, there is a certain sense of balance, certain sense of both focus and concentration at the same time, because you are there. It is not that you are lost and your attention is all over the place. So you and your attention should be together. इन zen में ना गुणवंत जी एक स्टोरी है वो 10 bulls 10 ox या 10 bulls ऑफ zen ऐसे बोलते हैं. तो उसमें वो आपका बुल है जो गायब हो जाता है और आप उसको ढूंढने निकलते हो और फिर उसको उसके फुटप्रिंट से ढूंढ के उसको पकड़ के उसको टेम करके उसको वापस लेके आता है. आपने सुना है क्या वो? हाँ सर, और बुक्स मेरे पास है सर, मैं ऑडियो हाँ, भी सुना है और बुक भी है मेरे पास। करेक्ट करेक्ट. और कभी कभी मैं रिपीट करता रहता हूँ। ट्रू ट्रू. तो इन दैट you and your ox or your bull is your attention. तो आपको उसको ढूंढ के उसको पकड़ना है. So that is the Zen philosophy. So is it possible to have inner stillness now? Is it okay for you to know what is the tools? What are the tools to have inner stillness? It's actually very easy. Just you and your attention. If you are aware where your attention is, you are at peace. Sometimes you are so restless, you don't know where your attention is. It's just all over the place. So then it becomes difficult. So then for a moment, you have to stop and find out. When we say no, the word gather your thoughts. So you're not gathering your thoughts, you are just finding where your attention is. किस thought पे है वो? Okay, maybe we can take some comments. If you have some comments, any observations, any questions. So basically, living from within outside, then to think about outside and live within. So this inner stillness is what you wanted to convey, right? Yeah. So it's not just one point. In fact, if you can uh, keep your attention on the whole 1 hour that we have discussed, then that is the point. Mm. So we understand the big picture. And when we have the big picture in mind, then we are not lost in the small picture. Hmm. Right? But if you are only in the small picture, then you have to always constantly find out where you are. Then you lose your connect. You understand the whole thing. And then you move in that whole space, you are always there. I know it sounds vague, but it's the feeling that I really want to convey, that when you have your mind open to everything, then you don't need to focus on one thing. You can be focused wherever you want. But you need to open. You don't need to close yourself to something in order to focus. As I was talking to Anil, that you don't get into a comfort zone. You just open everything. Be vulnerable. Be open and then do the work.
Anil, any thoughts? We need to live in present moment also. We need to concentrate in the presence of. When you say present moment, what I'm trying to say is the present is everything, not just your room and not just your company and your client. The present moment includes the entire world and entire existence and all the volatility and ambiguity and uncertainty, and everything is the present moment. So can you live in that present moment? Raj, does it make sense? Yeah, it does. It does certainly make sense. Very nicely said what Sanjita said, outside, inside out. Okay. Um, but there is one aspect of it. They say we are relaxed हो, right? Now, in that particular state, you are nice. Okay, मतलब that particular state is good. आप खुश हो, right? So that also is nice, right? But in that particular state, if you are sad, this is something which I'm reflecting, right? And then you are paying attention to that particular sadness. Okay. So जैसे भी relax हो तो you want to go deeper, right? You just want to focus more, right? खुश हो तो आप ज्यादा खुश होना चाहते हो, right? उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप सैड हो या जो भी आपका, I would not say unwanted feeling, but there is a feeling which is not resonating with you, right? Then you step back and stop rather than going inside it. Uh, that's a third aspect of it which I was feeling about. मतलब पहले दो तो कर चुके थे हम पहले, right? तो एक अलग था, but then you cannot extrapolate that till the point you are in that particular state, and when you are in that particular state you feel attention तो है, but जैसे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, right? तुम उस पे फोकस करते हो, right? Because that is the whole present for you at that point of time. You cannot go deeper into it, you stop it, right? That is one reflection I have. Yeah. Yeah, there can be many exercises to do. Would you like to do some more exercise? Huh? Or We can. I mean, I'm okay. normally, yeah, we have about 1.5 hours of session, plus or minus. Is anybody is in a hurry to close? Have some other urgent things which are pulling your attention? Okay. अगर नहीं है तो maybe we can do one exercise. Let's do it. It's a exercise of imagination. Okay. So we can close our eyes and gradually we remember, we visualize sitting where you are sitting in your room. And then your room is in your house and your house is in your building. And your building is in your locality. And your locality, gradually you expand your awareness, right? You expand it to include your neighborhood, then some more roads, some more buildings, your entire city.
and then entire city, go beyond it. The rivers and the mountains and the fields, and there's so many things right now around. Expand your awareness to the entire state of Gujarat or Maharashtra or Texas, wherever you are. Keep on expanding your awareness beyond the state to include the entire country. Then keep on expanding and expanding. Include the oceans, the water bodies, the mountains around. Gradually expand your awareness to become the whole earth. The spinning on its axis. And moving through space around the sun. In this vast, dark universe. Far away you can see some stars, and expand your awareness gradually to include the moon and other planets and the entire solar system. Experience the vastness of space, empty space, the silence, the magnitude of existence. Expand your awareness even more. Where the sun and the earth become very small. And you are now the size of the galaxy, which is one among billions and billions and billions of galaxies. Keep on expanding your awareness to whatever extent you can to include black holes and nebula and quasars and who knows what all astronomical bodies, stars. All this is the present moment. In this moment, you are all this universe. Any sound that comes in, anybody's noise that comes in from corner of the earth, it's okay. It's all included in this present moment. Some stars are dying, some stars are being born. Hundreds of people are dying and hundreds of people are being born. All day. All day. Okay, snap back into reality. How was the journey? Free ride to the space station and beyond. Yeah.
Anyway, this is the present moment is not just so much small space here. This whole thing is the present moment. And in that present moment, anything and everything can happen. You can be at peace, nothing to worry. Sanchita is having a broad smile. Yeah, so we just realized that there are whatever problems we are facing or whatever challenges we have are very small compared to the vastness of the universe and the space. And probably, like we say, that it's a very big ocean that is permanent, but a wave is a small thing in the ocean. So something like that happens with us. Yeah. If you are in the wave, you will face ups and downs. But if you are the ocean, yeah, it's okay. It's just happening. So Yeah. feel free to ride the wave when you can. Feel free to go deep and enjoy all the waves. Good. ठीक है. So, any closing comments and then we'll close. Anil? How do you feel? Anil, Yes, yes. Feeling relaxed. feeling relaxed. Okay. Um, I know. You don't want to speak after this. Hmm. Gunwan ji? यस सर, ऐसा ही होता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो फिर लास्ट में बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, हाँ, स्टिलनेस आ जाता है तो फिर बाद में बोलने का इच्छा नहीं होती। बराबर. लेकिन अभी सेशन होने के बाद अपने फैमिली के साथ जाके बात करनी है, तो फिर वो तो करना हाँ, वो पड़ेगा. तो करनी है। नहीं, वो तो करना पड़ता है। वो लोग बोलेंगे कहाँ तुम अपने कंफर्ट जोन में चले गए अभी तक. नहीं, उन लोगों को पता ही होता है सब। वो वो तो आने के बाद फिर वापस ही आना पड़ता है, और इसमें रहना ही है तो सब कुछ काम करना पड़ेगा। राइट. बट अभी उस अवेयरनेस के साथ अगर जाएंगे तो वी कैन ट्राई हाउ हम्म, फार वी कैन लिव विद दैट अवेयरनेस एंड डू आवर डेली वर्क. वो आई ये एम एक श्योर बात विद इन. समझ में, इसको हाँ, रेगुलर ही करते रहना होता है। करेक्ट. कि जो थोड़ा टाइम मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो उसको थोड़ा रेगुलर करते रहना पड़ेगा। या राज. Yeah, feeling nice, very nice. Okay, fine then. Shall we close? Is it okay to थैंक यू close? सर। Okay. Thank If you. you Thank get you. time, please join in future sometime. Thank you so Yeah, much. thank you. ओके, थैंक यू सर। Thank you. Thanks. Bye bye. Bye.